5. Understanding the entity and its environment. So, Essay 315 Identify and assessing the risk of material misstatement to understanding the entity, its environment states that the auditor shall obtain an understanding of the following. तो पांच चीज़ों की जो है ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है वाइल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो पहला तो है रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. दूसरा नेचर, हाँ, नेचर ऑफ द एंटिटी. देन थर्ड इज एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. फिर एंटिटी की ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट may result in risk of material misstatement. And last is measurement and review of the financial performance of the entity. तो पांच चीज़ों की एंटिटी को अंडरस्टैंडिंग लेनी है. एक तो मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज, entity key objective strategies and those related business risks that may result in risk of material misstatement. Entity ka selection and application of accounting policies including the reasons for changes thereto, nature of the entity, and industry relevant industry regulatory and other external factors including the applicable financial reporting framework. तो पहला समझते हैं हम. रिलेवेंट इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री में इंक्लूड करा जाएगा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर और कस्टमर का रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो इंडस्ट्री फैक्टर में आएगा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कस्टमर एंड सप्लायर का रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. फिर रेगुलेटरी में आता है. एक सेकेंड गाइस, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. इंडस्ट्री फैक्टर्स, ये इंडस्ट्री कंडीशन हो गए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. Example of the matters the auditor may consider include market competition with the entity engaged in seasonal activities, product technology relating to the entity's product. The industry in which the entity operates may give rise to specific risk of material misstatement. ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड. The industry in which the entity operates may give rise to the specific nature of the business and degree of regulation. अब रेगुलेटरी फैक्टर्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या आएगा? फाइनेंश एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. तो रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स इंक्लूड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, लीगल एंड political environment. अब example of matters the auditor may consider include accounting principles. Example of matters क्या हो सकता है? Accounting principle, industry specific practices, regulatory framework for regulated industry, registration and regulation that significantly affect the entity's operation, direct supervisory activities, taxation, government policies affecting the conduct of the entity's business, environmental requirements. और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? अदर इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एक्सेट्रा. तो एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स, पहले तो रेगुलेटरी की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटेड इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो अफेक्ट करती कंडक्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन. और एक्सटर्नल फैक्टर में जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लेशन एक्सेट्रा. अब नेचर ऑफ एंटिटी में उसके ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. Its operation, its ownership, and government structure, the types of investment that the entity is making and plans to make, including investment in special purpose entities, the way entity is structured, and how it is financed to enable the order to understand the classes of transaction, account balance, and disclosures to be expected in the financial statement. तो नेचर ऑफ एंटिटी में उसके ऑपरेशंस, उसका ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फिर है ना कौन से इन्वेस्टमेंट जो है कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट जो है एंटिटी का में बना मतलब करती है या फिर प्लान करती है करने को, इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज, and the way the entity is structured and how it is financed, that is enabling the auditor to understand the classes of transaction, account balance and disclosure to be expected in the financial statements. तो उसके operations,
Its go ownership and governance structure for types of investment the entity is making and plans to make, including investment in special purpose entities, the way the entity is structured and how it is financed to enable the auditor to understand the classes of transaction, account balance, disclosure to be expected in the financial statements. Now, un- an understanding of nature. Wait a second, guys. Hmm. An understanding. Hmm. ये क्या हो रहा है? Hmm. An understanding of nature of entity enables the auditor to understand whether entity is a complex structure, for example, whether it has subsidiaries. Complex structures often introduce issues that may give rise to risk of material misstatements. It also helps in understanding matters relating to the ownership, relations between owners and other people or entities. This understanding assists in determining whether related party transactions have been identified and accounted for appropriately. Examples of matter that the auditor may consider while obtaining understanding of nature of entity include तो इसमें बिजनेस ऑपरेशंस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑपरेशन with revenue sources, product services, conduct of operations, location of product facilities, key customers, suppliers of goods services, financing and financing में major subsidiaries, debt structure, financial reporting में accounting principles and revenue recognition practices. तो बिजनेस पहला तो बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंसिंग फिर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो बिजनेस ऑपरेशंस में नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्सेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज की कस्टमर्स सप्लायर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज investment and investment activities may such as capital investment activities planned or recently acquisitions या फिर financing and finance activities such as measure subsidiary debt structure या financial reporting में accounting principles and revenue recognition practices. Now entity selection and entity को appropriate and ये इवैल्यूएट करना है कि एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी जो है अप्रोप्रिएट है उसके बिजनेस के लिए और कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है विद द कंसिस्टेंट है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री. Now, entity के objective strategy and those related business risks that may result in the risk of material misstatement. तो the entity conducts its business in the context of industry, regulatory, and other internal and external factor. To respond to this factor, the entity's management define objectives which are overall plans for the entity. Strategies are the approaches by which management intends to achieve its objectives. The entity's objectives and strategy may change over time. Business risk is broader than the risk of material misstatement of the financial statements, though it includes the latter. Business risk may arise from change or complexity. An understanding of the business risk facing the entity increasing the likelihood of identifying risk of material misstatements, since most business risk will eventually have financial consequences and therefore an effect on the financial statements. However, the auditor does not have a responsibility to identify or assess all business risks because not all businesses give rise to risk of material misstatement. Examples of matters that the auditor may consider when obtaining an understanding of the entity's objective strategy, इंडस्ट्री डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या बोलते हैं एंटिटी के पास जो है पर्सनल और एक्सपर्टाइज नहीं है टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री. और प्रोडक्ट और सर्विस में इंक्रीज प्रोडक्ट लाइबिलिटी. देन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में डिमांड जो है एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं हो सकती. डिमांड हैज नॉट बी एक्यूरेटली एस्टिमेटेड. So industry development, a potential related business risk might, for example, the entity does not have personal expected to deal with changes in the industry, new product or service may increase productivity और सब में यही है potential related business risk might be. और फिर है example, the demand has not be accurately estimated. अब measurement and review of the entity's financial performance. तो
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हो गया, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल की रेशियोज ट्रेंड्स, फिर पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस. तो management and others measure and review those things they regard as important. Performance measures, whether external or internal, create pressures on the entity. These pressures in turn may motivate management to take action to improve the business performance or to misstate the financial statements. Accordingly, an understanding of the entity's performance measure assists the auditor in considering whether pressures to achieve performance targets may result in management actions that increase the risk of material misstatement, including those example key performance indicators, financial and non-financial key ratios, trends in operating statistics, then period on period financial performance analysis, credit rating agency reports, budgets, forecasts, variance allowance and department or other level performance reports. So now, why understanding the entity and its environment is significant? मतलब entity और उसके environment को समझना ज़रूरी क्यों है? So, understanding the entity and its environment in which operates is very significant क्योंकि help करता है auditor को in planning the audit and in identifying areas requiring special attention, gaining knowledge about client's business जो कि हमने chapter 2 में भी देखा था, gaining client's knowledge about the business is one of the important principle in developing overall audit plan. In fact, without knowledge of client's business, a proper audit is not possible. तो इसलिए अब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. Now, obtaining an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, uh, is a continuous dynamic process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. Continuous है, continuous process है of gathering, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग. मुआ की मेकअप आर्टिस्ट MUA, तो यहाँ पे GUA है. तो गैदरिंग, अपडेटिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट. गैदरिंग, अपडेटिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट. Dynamic or continuous process of gathering, updating, and analyzing information throughout the audit. The understanding establish a frame of reference within the auditor, which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. For example, when assessing risk of material तो ये देखें हमको चीज़ें है ना. तो असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिटरमाइन करना मटेरियलिटी, तो असेस करना रोमम, फिर डिटरमाइन करना मटेरियलिटी, कंसिडर करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डेवलप करना एक्सपेक्टेशंस फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाई करना वो एरियाज जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जो है नेसेसरी है. फॉर एग्जाम्पल, related party transaction, appropriateness of management use of the going concern assumption, or considering the business purpose of transactions. Evaluate karna sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representations. तो assess करना risk of material misstatement of the financial statement, फिर determine करना materiality in accordance with SA 320, फिर कंसिडर करना appropriateness of the selection and application of accounting policies, कंसिडर करना द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिटरमाइन करना मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद SA 320, असेस करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना वो एरियाज जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जो है नेसेसरी है. फॉर एग्जांपल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, appropriateness of management use of the going concern assumption, consider karna business purpose of transaction, developing expectations for use when performing analytical procedures, evaluate karna sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representations. So, assessing risk of material misstatement, determining materiality in accordance with SA 320,
Consider करना appropriateness of the selection and application of accounting policies. Consider the appropriateness of the selection and application of accounting policies. Identify करना areas where special audit consideration जो है necessary है. For example, related party transaction, appropriateness of management use of going concern assumption, considering the purpose of transactions. Develop करना expectations for use when performing analytical procedures. फिर evaluate करना sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumption and of management's oral and written representations. तो assess करना risk of material misstatement of the financial statements. फिर determine करना materiality को in accordance with SA 320. फिर consider करना the appropriateness of the selection and application of accounting policies. Identify करना where a special audit consideration may be necessary. Related party transaction management use of the going concern assumption considering the business purpose of transactions. Develop करना expectations for use when performing analytical procedures. Evaluate करना sufficiency and appropriateness of audit evidence obtained, such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representations. Illustration भी पढ़ लेते हैं. तो एक ऑडिटर है एबीसी टेक्सटाइल्स लिमिटेड का जो चॉक्स आउट करता है ना ऑडिट प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस. तो एंटिटी का बिजनेस तो समझना बहुत ज़रूरी है ऑडिट प्लान बनाने के लिए. तो ये ये कह रहा है कि उसने बिना अंडरस्टैंड करे एंटिटी के बिजनेस को ऑडिट प्लान बनाया. ओके, सिंस ही हैज कैरिड आउट मैनी ऑडिट्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज, देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड. एडवाइज द ऑडिटर हाउ ही शुड प्रोड्यूस सॉरी प्रोसीड. To obtain करना an understanding of the entity and its environment, including the entity's internal control, is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information. तो पहले तो हमको understand करना है और ये एक continuous process है of gathering जैसे GOA. Throughout the audit, the auditor should proceed accordingly. So now, while auditing the books of accounts of Heavy Material Limited for the financial year 22-23, a team member of the auditor of Heavy showed no inclination towards understanding the business and the business environment of the above mentioned company. Yes. The approach of the team member of the auditor of heavy material is incorrect because understanding the business and business whose audit is to be conducted is very important, as it helps in planning the audit and identifying areas requiring special attention during the course of audit of that. Now, Prince Blankets is engaged in business of blankets. Its major portion of sales is taking place through internet. Advise the auditor how he would proceed in this regard. While understanding internet sales is being perceived as risky area by the auditor and thereby would be spending substantial time and extensive work on this particular area. Now, internal control. इंटरनल कंट्रोल अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में.